अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. Today's topic for F5 is cost volume profit analysis, and this topic deals with the relationship between these three variables that I have written on the heading, that is costs, volume and profit. Okay, so before we move on, we need to study something, that is that what the idea of CVP analysis is. CVP analysis is basically the extension of marginal costing, and it studies the relationship between cost, volume and profit. Okay, so basically what cost you have to keep in mind? You have to keep in mind there are two types of costs, that are fixed cost and variable cost. So when we are studying cost volume profit analysis, we will keep these two costs in our mind. Secondly, by volume we refer to the units of activity, or simply activity. That can be in units or in amount terms. Okay, and by profit we mean either a profit or a loss. Simply क्या होता है? Profit is total revenue minus total cost. So हम profit से ये चीज़ assume करते हैं. So before we get into the details of this topic, you have to you have to keep in mind these three concepts, that is, by cost we mean fixed and variable cost, by volume we mean the activity, that is an amount of units and number of units, and by profit we understand profit or loss, simply total revenue minus total cost. Okay, now there are certain assumptions behind cost volume profit analysis that are a little bit contradictory to the practical world, but because we have to study relationship between three things, obviously we have to keep all other things assumed. The first assumption of CVP analysis is that the firm sells one product only. ठीक है, it is selling one product only. If multiple products, then same ratio. ठीक है, यानी कि अगर it is selling one product, ये हमारी first assumption है. So हम पढ़ेंगे two types of CVP: CVP in single product and CVP in multiple products. In this video we will cover CVP in single product only. However, the assumption is that the firm is selling one product only. But if we are selling multiple products, means more than one product, आपका बहुत बड़ा portfolio है, then you are selling them in a fixed proportion. क्या मतलब होता है कि आपकी sales का total units कितने भी हों, लेकिन आपके जो है वो product की जो ratio है वो हमेशा same रहेगा. If we say for example कि हम 30, 40, 20 और 10, ये हम चार products sell करते हैं. अब टोटल कितने भी हो, हम अपने प्रोडक्ट को 30, 40, 20, 10 के रेशो में सेल करते हैं, चाहे कोई भी हमारा सेल्स का वॉल्यूम हो, कोई भी क्वांटिटी हो, बट आवर सेल्स मिक्स, इसको हम मिक्स कहेंगे, सेल्स मिक्स विल रिमेन सेम. सेकेंड थिंग इज दैट द फिक्स कॉस्ट टोटल वाली, द टोटल फिक्स कॉस्ट shall remain same throughout. वैसे तो this is the concept of fixed cost, that it remains fixed for a period of time, but हम यहाँ पर थोड़ा practically देखें तो fixed cost भी कुछ time period के लिए fixed होती है and then it becomes variable or it changes. But in CVP analysis हम ये assume करते हैं that the fixed cost is going to remain fixed throughout. Third thing that we are going to assume is unit variable cost. Variable cost per unit is also constant. क्या मतलब होता है कि for example direct material is a unit cost, unit variable cost, direct labor is a unit variable cost. So this is going to remain constant throughout. Total variable cost is definitely going to change with the level of activity, but the unit variable cost shall remain constant. Then
have another assumption, that is selling price is also कि आपकी सेलिंग प्राइस भी थ्रू आउट सेम रहेगी. यानी कि अब इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इन रियलिटी बहुत सारी एक ही फर्म के बहुत डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस हो जाती हैं कि वो डिस्काउंट्स भी दे रहे होते हैं, सेल्स लगा रहे होते हैं, मे बी वो शुरू में लॉन्च करते वक्त प्रोडक्ट की प्रीमियम प्राइसिंग कर रहे होते हैं, हाई प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ द रियल केस. बट फॉर CVP एनालिसिस वी अज्यूम कि सेलिंग प्राइस थ्रू आउट द टाइम पीरियड इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड और कोई चेंज नहीं होगा सेलिंग प्राइस के अंदर. एंड लास्टली प्रोडक्शन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सेल्स वॉल्यूम. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितना हमने प्रोड्यूस किया है हम उतना ही सेल ऑफ करेंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो एन असम्पशन. लेकिन इन्वेंट्री, बेसिकली इन्वेंट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता CVP एनालिसिस में. हाउएवर इन रियलिटी देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री. देयर इज क्लोजिंग इन्वेंट्री, देयर इज ओपनिंग इन्वेंट्री, देयर इज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, देयर इज इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, देयर इज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स एज वेल. बट फॉर CVP एनालिसिस वी डू नॉट अज्यूम एनी काइंड ऑफ इन्वेंट्री. वी जस्ट सिंपली से कि जितना हमने प्रोड्यूस किया है उतना ही हमने सेल ऑफ कर दिया है. एंड देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री, देयर इज नो क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओके. Let's move on to one thing that we call as CS ratio. इसको हम कहते हैं contribution to sales ratio. अच्छा, contribution क्या होता है? Contribution is basically selling price minus variable cost is कंट्रीब्यूशन. अच्छा, अब हम CS रेशो कैसे निकालते हैं? CS रेशो हम निकालते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस. ठीक है. अब इससे क्या इन्फर होता है? इससे ये इन्फर होता है कि बेसिकली कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो हमें ये बताता है कि हाउ मच कंट्रीब्यूशन वी आर अर्निंग contribution is earned from $1 सेल. यानी $1 सेल करने से या $1 सेल करने से आपको कितना कंट्रीब्यूशन अचीव हो रहा है. Because this contribution is used to cover your fixed cost and your profit, therefore you have to attain certain amount of contribution in order to cover your fixed cost and in order to cover your profit as well. Because variable cost तो obviously contribution subtract करने के बाद आ रही होती है. Contribution variable cost subtract करने के बाद आता है. Therefore I'm not talking about variable cost, I'm talking about fixed cost and profit. For example, that your selling price is 160. ठीक है. Your variable cost is 40. Now you are supposed to calculate a contribution to sales ratio. तो हम सिंपली क्या करते हैं? हम सिंपली ये करेंगे कि सेलिंग प्राइस के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे. वी विल गेट 120 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अच्छा, CS रेशो के लिए सिंपली क्या होता है? कंट्रीब्यूशन दैट इज 120 अपॉन सेलिंग प्राइस दैट इज 160 विच विल गिव अस 0.75. अब हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि फ्रॉम every $1 sale there is a contribution of $0.75. यानी कि $1 सेल के अंदर 75% is the contribution, basically 0.75 is the contribution and the remaining 25% is the variable cost. Okay. Let's move on to break even point. अच्छा, break even point theoretically क्या होता है? Break even point is basically a figure or an activity level where there is no profit, no loss.
यहाँ प्रॉफिट हो रहा होता है, ना पे यहाँ पे लॉस हो रहा होता है. इसका मतलब होता है कि ऑल कॉस्ट्स आर जस्ट कवर्ड. दैट इज योर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट. यानी कि आपकी सारी कॉस्ट आर जस्ट कवर्ड और उससे ऊपर कुछ नहीं. क्या मतलब है कि आपका रेवेन्यू जो है वो इतना इनफ है कि आपकी सारी कॉस्ट कवर हो रही है. हाउएवर देयर इज नो प्रॉफिट एंड देयर इज नो लॉस. ठीक है. अगेन दिस इज एन एस्टिमेटेड फिगर बिकॉज वी आर हैविंग सो मेनी assumptions, so definitely this is not going to be the accurate figure, this is the estimated figure. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा BEP आ रहा है, हमने सब कैलकुलेट करा, हमारा BEP आ गया 200 यूनिट्स. यानी कि 200 यूनिट्स अगर हम सेल करेंगे, प्रोड्यूस करके सेल करेंगे, तो हम ना तो प्रॉफिट अर्न करेंगे ना ही लॉस अर्न करेंगे. इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि इफ़ योर सेल्स आर इक्वल्स टू 200 यूनिट देन यू आर ब्रेक इवन और नो प्रॉफिट नो लॉस. ये आपका एट 200 ये केस होता है. बट इफ यू आर सेलिंग ग्रेटर देन 200 यूनिट्स, यानी आप 200 यूनिट से ज़्यादा बेच रहे हैं, इट मीन्स दैट यू आर इनकरिंग अ प्रॉफिट. क्योंकि 200 यूनिट्स पे तो आपकी कॉस्ट सारी कवर हुई थी. अब 200 से ज़्यादा जो भी सेल हो रहा है वो सब प्रॉफिट में जा रहे हैं. एंड इफ़ यू आर सेलिंग लेस देन 200 यूनिट्स, यानी कि आपकी सेल्स आर लेस देन 200 यूनिट्स, इट मीन्स दैट योर कॉस्ट आर नॉट बीइंग कवर्ड एज येट. Your revenue is not enough to cover your cost, therefore you are incurring a loss. And below break-even point, you are at a loss position. Above break-even point, you are at a profit position. At break-even point, you are at no profit, no loss position. I hope this was very clear to you. Alright, now let's move on to the formula. The formula for break-even point in units is basically fixed cost upon contribution per unit. ठीक है. और if you want to calculate break-even point in revenue terms, यानी कि $1,000 terms, then you will take fixed cost upon CS ratio. Or if you do not want to do this, you can simply take the answer of this and multiply it with the selling price. तो आपका break even in revenue आ जाएगा. ठीक है. But there are two separate formulas that deal with break even point. अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है. बिफोर वी मूव ऑन टू द एग्जाम्पल, एक चीज़ आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अगर गिवन है तो आपकी फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी. बजटेड फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड OAR मल्टीप्लाइड बाय बजटेड एक्टिविटी. अब ये बजटेड एक्टिविटी से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्चुअल एक्टिविटी से क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. देखो, जब हम फिक्स्ड OAR निकालते हैं ना, OAR रेट, तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं कि फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट भी है जो भी हमारी अपॉन बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी. क्योंकि उस वक्त हम बजट कर रहे होते हैं ना, वी आर नॉट कैरिंग आउट दी एक्चुअल एक्टिविटी, बजटेड एक्टिविटी यूज़ कर रहे थे. देयरफॉर हम जब इस फार्मूला को रीअरेंज करते हैं तो ये फार्मूला इस तरह बनता है, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड OAR, जो कि हमारा OAR है, और बजटेड एक्टिविटी उससे मल्टीप्लाई हो जाती है. देयरफॉर इफ इन एनी क्वेश्चन इफ यू आर गिवन अ फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, you are going to multiply it with the budgeted level of activity in order to arrive at the fixed cost. Okay, let's do an example first. The question is that your selling price is $100. ठीक है. Your direct material is $10. Your direct labor is $15. Your variable overheads are $5. Your fixed OAR is again $5 per unit.
your budgeted units are 30,000 and actual units are 28,000. ठीक है. Your other fixed cost these are non-production. ठीक है. Now you are required to calculate break even point in units and in revenue terms. अच्छा जी, सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जो फिक्स ओवरहेड्स हैं दैट ये तो नॉन प्रोडक्शन तो हमारी गिवन है ना हमें टोटलिटी के ऊपर, दैट इज़ 270,000 पे गिवन है. जो हमारी ये वाली है OAR से जो हम कैलकुलेट करेंगे, पहले हम बजटेड फिक्स कॉस्ट निकालेंगे. हम कैसे निकालेंगे अभी मैंने आपको समझाया कि यू विल सिंपली टेक द OAR इनटू बजटेड यूनिट्स, that is 5 multiplied by 30,000 which will give you 150,000. ठीक है. So your total fixed cost will be 150,000 plus 270,000 which gives you 420,000. अच्छा जी, ये तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई. अब हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे अपना. इट इज़ बेसिकली सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास DM था, DM was 10, we had DL it was 15 and we had variable overheads that were 5, so our contribution is $70 per unit. Okay, now break even point in units हमारा कैसे आएगा, 420,000 that is fixed cost upon 70 that is our contribution per unit, which gives you 6,000 units. ठीक है. At 6,000 units you are incurring no profit no loss. अच्छा, अब सिंपली अगर इसको हमें कहा जाए कि हमें ब्रेक इवन इन रेवेन्यू निकालना है, so we can simply multiply the break-even units into the selling price, that is $600,000 BEP in revenue. ठीक है. So this is how we calculate our break-even point in units and in revenue terms. और इसमें fixed cost का भी concept आ गया. So I hope that it is pretty clear to you. अच्छा, एक चीज़ और होती है that we call as margin of safety. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि योर एक्टिविटी अबव ब्रेक इवन पॉइंट, यानी आप ब्रेक इवन पॉइंट से कितना आगे ऊपर जा चुके हैं. ठीक है. और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज बेसिकली योर प्रॉफिटेबल एरिया. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, अपनी पुरानी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास 6,000 यूनिट्स थे, तो अगर हमारा बजटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखा जाए तो हमारे बजटेड यूनिट्स वर 30,000. ठीक है. माइनस 6,000, क्योंकि 6,000 तो हमने कॉस्ट कवर करने के लिए लगाए, तो हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी वॉज 24,000 यूनिट्स. यू कैन कॉल इट MOS. ठीक है. और अगर हमारा एक्चुअल बजट एक्चुअल MOS देखा जाए तो एक्चुअली हमारी एक्टिविटी लेवल वाज 28,000 माइनस 6,000, डेफिनेटली दैट गिव्स यू 22,000 यूनिट्स. यानी 22,000 यूनिट्स यू आर अबव break even point, यानी कि these 24,000 units if you take the budgeted and these 22,000 units if you take the actual activity level is going to earn you profit. ये आपका profitable area है. This is the area where you are covering your cost. This is your total area 30,000 and 28,000. This is your cost covering area and this is your profit area.
अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी 22,000 था अपॉन 28,000 इंटू 100, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इज 78.6%. वी आर इन द सेफ मार्जिन. यानी कि टोटल यूनिट्स में से हमारे 78.6% यूनिट्स आर मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड द रिमेनिंग वंस दैट इज 22.4 यूनिट्स परसेंटेज यूनिट्स आर टू कवर योर कॉस्ट और द ब्रेक इवन यूनिट्स. अच्छा, अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू टर्म्स में निकालना है, सो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई द यूनिट्स बाय द सेलिंग प्राइस, सो यू विल गेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द revenue terms as well. Okay, the last concept in today's lecture is basically target profit in BEP. BEP का कॉन्सेप्ट यूज करके हम एक टारगेट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं कि हमें देखो फिक्स कॉस्ट कवर करनी है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना है. तो अब हमें कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, ठीक है. इसका मतलब होता है दैट द एक्टिविटी टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट. सिंपली क्या करते हैं, जो हमारा BEP के यूनिट्स निकालने का फार्मूला था ना, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन था ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन. उसमें हम टारगेट प्रॉफिट ऐड करते थे, दैट इज TP. हम फिक्स कॉस्ट के अंदर टारगेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमें टोटल पता लग जाएगा कि हमें टोटल कितनी कवरेज चाहिए फ्रॉम द यूनिट्स. तो हम उसको जब डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, तो हमारे वो यूनिट्स आएंगे जो हमें सेल करने टू अचीव अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट. सेम अगर आपको उसको रेवेन्यू टर्म्स में निकालना है, सो यू विल डिवाइड दिस बाय द CS रेशो. ये अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन करेंगे, सो यू विल गेट यूनिट टर्म्स. इफ यू विल डिवाइड इट बाय द CS रेशो, यू विल गेट इन द रेवेन्यू टर्म्स. अच्छा, इसकी भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं फॉर अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जाम्पल, योर सेलिंग प्राइस इज $120. योर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 30%. Variable selling overheads are $3 per unit. And fixed overhead absorption rate is $54 per unit. ठीक है, आपके budgeted units are 5,000. आपका टारगेट प्रॉफिट इज $405,000. Now you are required to calculate BEP first in units and target sales to achieve the target profit. कि कितनी सेल्स करें, पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है सिंपल, फिर उसके बाद हमें टारगेट प्रॉफिट को ऐड करके जो है वो टारगेट सेल्स निकालनी है. सबसे पहले तो वी विल कैलकुलेट आवर contribution. Selling price is $120. Variable cost to 30% है, that is 36, and your other variable selling overheads that are 3. तो आपके पास आ जाता है contribution margin as $81. Now fixed cost, total fixed cost, because fixed cost per unit given है, हमें उसको totality पे निकालना है for the formula. Simply हम क्या करेंगे, fixed OAR multiplied by BA means budgeted activity, 54 multiplied by 12,000, which gives you $648,000 as your fixed cost. अब हमारा काम आसान हो गया. अब हमें simply break even point निकालना है. So for BEP हम क्या करेंगे, 648,000
upon, that is fixed cost, upon contribution, that is 81. So you will get 8,000 units. It means that you have to sell 8,000 units in order to break even, in order to achieve no profit no loss situation. बट इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट, आपको कुछ टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट के अंदर हमने कहा था कि हम अपनी टारगेट प्रॉफिट की अमाउंट ऐड करते हैं, दैट इज़ 405,000 अपॉन contribution margin, that gives you 13,000 units. यानी कि you have to sell 13,000 units in order to achieve your target profit of 405,000. अच्छा, अगर हम इस चीज़ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज एन एडिशनल चीज़ देखें, तो इफ़ यू आर सेलिंग 13,000 यूनिट्स, सो योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गोइंग टू बी 13,000 माइनस 8,000, दैट इज 5,000 यूनिट्स. यानी आप 5,000 यूनिट्स जो है वो प्रॉफिटेबली सेल कर रहे हो, दैट आर फॉर योर प्रॉफिट एरिया. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ graphical representation of break even point. सबसे पहले तो ये हमारा ग्राफ का y axis, this is the x axis. अच्छा, आपके पेपर के अंदर F5 में you are not required to draw a graph, you are just required to simply interpret a graph, and मैं वही सिखा रही हूँ. ठीक है, so this is your revenue y axis and your units in the x axis. सबसे पहले हम बनाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन, बिकॉज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट, देयरफॉर इसकी एक लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हमने कह दिया दैट दिस इज आवर फिक्स कॉस्ट. देन वी विल मूव ऑन टू द लाइन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट. क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट से स्टार्ट होती है, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 0 से, और वो इंक्रीज होती है बाय द टाइम यूनिट्स इंक्रीज होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती रहती है. सो योर वेरिएबल कॉस्ट लाइन शैल गो लाइक दिस. इसको हमने लेबल कर दिया एज आवर वेरिएबल कॉस्ट लाइन. ओके, नाउ अब हमारी टोटल कॉस्ट लाइन, डेफिनेटली हमारी टोटल कॉस्ट लाइन भी होगी. टोटल कॉस्ट लाइन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फिक्स कॉस्ट. ऑब्वियसली कुछ अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट होगी, उसके बाद ही हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऐड होती जाएगी ना. सो दैट इज गोइंग टू गो पैरेलल टू द वेरिएबल कॉस्ट एंड विल स्टार्ट फ्रॉम फिक्स कॉस्ट एज वेल, क्योंकि 0 यूनिट्स पे हमारी टोटल कॉस्ट इज गोइंग टू बी फिक्स कॉस्ट ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट किया, तो योर टोटल कॉस्ट लाइन इज गोइंग टू गो अबाउट लाइक दिस. एंड लास्टली हमारी टोटल रेवेन्यू की लाइन, ऑब्वियसली 0 यूनिट्स पे 0 रेवेन्यू होगा. as soon as you are going to start increasing your units, your revenue is going to start increasing like this. ठीक है, so this is your total revenue line. अच्छा, हमने ये पढ़ा था that the break even point is basically the point where your total revenue equals total cost. ठीक है, so if in the graph we can see your total revenue is equaling your total cost at this stage, जहाँ पे ये दोनों lines intersect कर रही हैं. So this is going to be your break even point in units, and this is going to be your BEP in revenue. अच्छा, एक चीज़ हमने और बोली थी कि जब हम ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जाते हैं, मीन्स कि ब्रेक इवन पॉइंट से आगे की अगर हमारी सेल्स हो रही हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट योर टोटल रेवेन्यू लाइन is above your total cost line, means revenue is greater than cost. It means that you are incurring a profit. मैंने कहा था ना कि break even point से ज़्यादा यूनिट सेल हो रहे हैं, it means you are incurring a profit. That is your total revenue is greater than total cost, you are incurring profit above BEP. ठीक है, अच्छा अगर हम पीछे आ जाएं, that is if we go beyond, if we go back to this part where हमारी cost की line, that is a red line, is above the blue line, that is a revenue line,
it means that you are incurring a loss because your total cost is greater than your total revenue. आपका revenue अभी इतना enough है ही नहीं कि वो cost को cover कर रहा हो. Therefore you are incurring a loss situation here, that is below BEP, यानी कि number of units you are selling are less than your break even point, यानी कि आपने अभी अपनी total cost recover नहीं की है. Therefore अभी आपको जो है वो break even point achieve करना है. So in theoretical terms it is beneficial as soon as a business achieves its break even point. जितनी जल्दी वो ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करेगा, इसका मतलब है कि उतनी जल्दी उसने अपना लॉस मेकिंग एरिया कवर करके अब वो अपने प्रॉफिट मेकिंग की तरफ बढ़ रहा है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. Inshallah we will continue in the next video that is going to deal with the CVP analysis in multiple products. I hope the CVP of single product was clear to you. Thank you. Allah Hafiz.